अस्सलाम वालेकुम हम सब खैर से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए जो है वो फिफ्थ क्लास की भी जो इंग्लिश MCQs है साइंस सब्जेक्ट के वो लाऊंगा। तो फोर्थ हम लोगों ने मुकम्मल कर दिया कल। आज से फिफ्थ क्लास के जो MCQs है वो स्टार्ट करूँगा। तो लेट्स सी, चलते हैं फिफ्थ क्लास के जो MCQs है पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारे साथ है, पहला चैप्टर है साइंस का फिफ्थ क्लास का। चैप्टर नंबर 1 है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। पहले सवाल हमारे साथ है, किंगडम एनिमलिया डील्स विद एनिमल्स, किंगडम प्लांट्स प्लेंटी डील्स विद प्लांट्स, किंगडम मुनीरा डील्स विद बैक्टीरिया, किंगडम प्रोटेस्टा डील्स विद eukaryote organism single cells, and kingdom fungi deals with the prokaryote organism mushrooms. And who proposed the five kingdom classification in 1969? Robert Hay Whittaker. And what is the eukaryote cell, single cell? What is prokaryote cell, multicellular? Study of algae is called ecology. Study of fungi is called mycology. And plants, animals and fungi are multicellular organism, and bacteria and fungi are unicellular organism. का सवाल हमारे साथ है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है अपना खुराक बनाती है फोटोसिंथेसिस के जरिए। अ प्रोसेस दैट डज नॉट टेक प्लेस इन फंजाई फोटोसिंथेसिस। algae makes their own food by photosynthesis, and Clisteria, Ulva and Volux are diseases caused by algae. And the word animal comes from the Latin word meaning soul or breath. Animals are further divided into two groups, vertebrates and invertebrates. Animals with a backbone are called vertebrates, and fish, amphibians, reptiles, birds and mammals are example of vertebrate animals. Animals without backbone are called invertebrates. Worms, spiders and insects are example of invertebrate animals. And vertebrate animals that take on the temperature of their surrounding are called cold-blooded. Vertebrate animals that maintain a constant body temperature are called warm-blooded. Birds animals are warm-blooded. Fish, amphibians and reptiles are cold-blooded. How many kinds of fishes are there? More than 30,000. 30,000. The body of fish is covered with scales. A fish swims in the water by its fins. Fish takes breath through their part called gills. जैसे फिश मछली जो है वो अपना सांस लेती है उसको गिल्स कहते हैं। उसके बाद हमारे साथ एनिमल्स दैट लिव इन लैंड एज वेल एज वाटर, वो जानवर जो ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं उसको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस. एम्फीबियंस लाई देयर एग्स इन, एम्फीबियंस अपने जो अंडे देती हैं वो कहाँ पे देती है? वाटर, पानी में देती है. फ्रॉग, टोड्स, निम्फ्स एंड स्लैमड्रस आर एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस. एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ ऑन लैंड बट टू ऑफन लिव इन वाटर आर, वो जानवर जो ज़्यादातर जो है वो वक्त जो है ज़मीन पर गुजारते हैं, ज़मीन पर गुजारते हैं और कुछ वक्त के लिए जो है वो पानी में रहते हैं, उसका क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स कहते हैं. रेप्टाइल्स लाई देयर एग्स ऑन, रेप्टाइल्स अपने अंडे कहाँ पे थे? लैंड, ज़मीन पे देती हैं. लेजर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स एंड tortoises are example of reptiles. How many kinds of birds are there? 9,000 birds are there. ज़मीन पे तकरीबन 9,000 करीब जो परिंदे हैं. Which is biggest bird in the world? दुनिया में सबसे बड़ा जो परिंदा है वो कौन सा? वो ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग कहते हैं. And the animals that give birth to their babies and feed them with milk are mammals. वो जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें जो है वो अपने दूध से पालते हैं उन्हें क्या कहते हैं? mammals कहते हैं. Which is the only mammal that can fly in the air? Bat. How many kinds of insects are there? तकरीबन कितने जो है वो कीड़े मकोड़े हैं दुनिया में? तो टोटल जो है वो 80,000 है, means more than 80,000. Which insects are environment friendly? Earthworms. Heaviest insects found in Africa is goleth beetle. How many pairs of joint legs do insects have? Insect कितने जो है वो joints होते हैं? तो वो 3 होते हैं. How many species of plants have been discovered? More than 3,80,000. तकरीबन species जो है पूरी दुनिया में वो 3,80,000 के लगभग है. उसके बाद हमारे साथ सवाल है, ferns and mosses are example of non-flowering plants. And instead of speed, what non-flowering produce spores? Flowering plants are further divided into two main types called monocot plants and dicot plants. Seeds of monocot plants contain how many cotyledons? Speed leaf 1 cotyledon. Seed of dicot plants contain how many cotyledons?
seed leaf, two cotyledons. Which plants have parallel leaf venation, monocot plants? Which plants have knitted venation of leaves, dicot plants? Flowers of which plants have multiple of three flower leaves, monocot plants? Flowers of which plants have four or multiple of four flower leaves, dicot plants? Spider is an insect, false. Mushrooms belong to plant kingdom, false. Leech is example of invertebrate, true. And all insects have two pairs of wings, false. Chapter number 2 हमारे साथ है microorganism. Microorganism are grouped as virus, bacteria and fungi. ये एक microorganism है, microorganism है. How many cells do bacteria have? 1. Bacteria में कितने cells होते हैं? 1. Escherichia is an example of bacteria. Common cold is caused by flu virus. Influenza is example of virus. Which are largest microbes among bacteria, virus and fungi? Fungi. Yeast is example of fungi. Which are the known cellular organism? Virus. Penicillium is fungus that produce antibiotic cells called penicillin. Any disease is caused by presence of microbial organism in the body is called infection. And chapter C हमारे साथ है seeds, their structure and germination. What type of seeds are there? Monocot and dicot. Seeds coat is known as a testa. The opening of the seeds is called micropyle. Mini plants inside the seeds is called embryo. And which part of seed develops into plant's embryo? And what emerges first in the new plant? Roots. And structure that emigrates from the soil of new plants is called hypothetical. And seed germination, which the cotyledons emerge above the ground is called apical germination. उसके बाद हमारे साथ है चैप्टर नंबर 4. इंशाल्लाह कल से चैप्टर नंबर 4 भी करेंगे. आज हम लोगों ने 3 चैप्टर कर लिए हैं साइंस के, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 5th क्लास की. और रेस्ट ऑफ जो बाकी जो है वो इंशाल्लाह वो कल करेंगे. थोड़े से लंबे हैं, पहला चैप्टर थोड़ा सा लंबा था तो वीडियो थोड़ी सी लंबी है, तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा. तो इंशाल्लाह बाकी जो तकरीबन 7 चैप्टर्स बाकी है वो ऐसे ऐसे इंशाल्लाह कल और परसों जो 5th क्लास की इंग्लिश भी जो मुकम्मल करेंगे. तो अगर आपको पसंद है तो मुझे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर ले. थैंक यू.